Hello everyone, my name is Jatintenguriyabusiness and welcome to UPSC with Jatin. In this video, I am going to analyze for you guys my CDS1 2023 English paper, like how I attempted it and how I scored 75.55 marks in English and overall as 164.335, and I qualified for everything from Air Force, OTA, IMA and INA. So let's get started without any further delay now. So my roll number was this. You can check in the list, you can get my name, and this is the English booklet, as you can see. Let's get started now. So the first thing is completion of sentence. For this, what I will ask you guys to do is to read newspapers, read novels, and go through few phrases classes, phrase and idiom classes. Okay, this section can only be improved if you do these things. If you read novels, if you watch something in English, only this can help you in this particular section. Otherwise, you just keep on watching lecture and lecture. This will not help you that much. So here you can see, in my English paper, I attempted each and every question and my 22 questions were wrong, due to which I got 75.55 marks. I didn't left any question. Okay, so it's all your choice. If you want to left question in English paper, it's all up to you. If you are confident enough, I'm not saying you to attempt each and every question. Just focus by giving mocks, like what do you think, what is your accuracy when you're attempting each and every question, and what is your accuracy when you're attempting only specific questions. If there is not a major difference, I will suggest you to attempt each and every questions, and if there is a difference, please resist yourself from attempting each and every question. So now moving ahead, this was a very, I won't be explaining each and every particular question, because as you can see, I also have few questions which are incorrect here, but I can only tell you the idea by which you can also score around 75.5 and 80, 70 marks, and you can also qualify for Air Force, OT, and your dream post and dream qualification. Yeah. So let's moving ahead. They were informed that the inaugural version of the scheme had 3 parts. So there, what I did, I didn't know anything. I was just believing on my intuitions as per what I've read in newspaper and how I used to read English, how I used to basically live English. So what I thought, okay, यहाँ पर जो एक चीज़ है सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है, you need to also you can eliminate the options by checking on the grammatical errors, क्योंकि कोई भी जो भी सेंटेंस बनेगा वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, राइट. So they were informed that the inaugural version of the scheme was 3 parts. See, this sounds very much incorrect grammatically. Have 3 part, had has 3 parts. Okay, so what logically fits here? Had 3 parts. They were informed. See, this is in a past tense. They were informed that the inaugural version of the scheme had 3 parts. Grammatically, you just checked it and you just went ahead. What would you do? What would you do? See, this is in a past tense. Okay, what would you do if you will win a lot of monies? Okay, monies. See, we don't use s with money, so I just eliminated this option. If you won a lot of money, okay, makes sense. Past kind of a, if you have won a lot of money, if you have would won a lot of money. So you just need to believe in your intuitions and click the answers, and you can only improve this particular thing by reading novels, phrase, and doing some idiom classes. Okay, so this how you will do your completion of sentence. For now, what you can do, you just focus on phrase and idioms, and keep yourself in touch by reading some random newspaper. Let's say you can also read Times of India, you can also read the Hindu, whatever you prefer, just to be in touch with English. And because the reason I'm saying you to read newspaper, because that will also help you in being in touch with current affairs as well. Okay, the next part is comprehension. So as I told you in my previous video, what you can do for comprehension, just go through previous 6 paper comprehension questions, read the passage and answer them. If you have time, go through cat passage, because if you have done cat passage, cat RCs, these RC will be nothing in front of you. You will find them very, very super easy, because the RC level in cat is very high. So once you get used to them, the CDS RCs are nothing in front of it. So I will suggest you, if you have time, please go through the RCs of cat.
because there you will getting an idea of the general tone of the passages, how the use of machines has failed us bring up. So these are the very general passages, I would say. See, here also I had this another passage by plastic is essential commodity with multiple uses based on its key components of malleability, flexibility, and durability. So my one question is incorrect in this passage. Now coming to word classes, how you can improve this. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर मुझे पता है ये जब मैं गया था तो मैंने ये इसके बारे में तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर था ही नहीं. सो दैट्स द रीज़न यू कैन सी आई हैव अ वेरी बैड एक्यूरेसी हियर. तीन क्वेश्चन गलत है. एंड सो what you can do, just go through just a small introduction video about this particular thing. What is pronoun, what is noun, what is adjective, what is adverb, what is determiners, everything like noun, determiner, adverb, preposition. You don't need to go in very much depth because they don't ask you the type and everything like this. They just simply ask what it is. Is it a noun, is it a gerund, is it a conjunction, it is an adjective. So you just need to do this. Okay, so what I'll suggest you to just go through a basic video which will just introduce you like what is preposition, what is determiner, what is gerund. So just do this because you will be getting like around 10 questions, and definitely it is very simple and fairly. If you have done the classes, you will be easily marking this particular thing, and this is a easy mark. So I don't want you to left any one of them. Moving ahead, and for the fill in the blanks, again this can be only improved by your reading habits, your listening habits, etc etc. And the how, अगर वो भी क्लिक नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन. तो ही वॉज स्पीकर दैट आई एवर हर्ड मतलब क्या है, मोस्टली आना चाहिए राइट, क्योंकि अभी तक मैंने उससे अच्छा स्पीकर सुना ही नहीं है. तो ही इज़ द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर दैट आई हैड एवर हर्ड राइट. मतलब देखो यहाँ से मैंने एलिमेंट कैसे किया, अगर मुझे समझने भी नहीं आता तो मैं एलिमेंट कैसे करता. मोर, ही इज़ अ मोर स्पीकर. मोर मतलब कंपेरिजन की यूज़ होता है, बट ये कहाँ पर किससे कंपेरिजन कर रहा है मुझे नहीं पता. ही वॉज वेरी इलोक्वेंट स्पीकर दैट आई हैव एवर हर्ड. मैंने अभी तक, ही वॉज वेरी इलोक्वेंट स्पीकर. अगर यहीं पर ख़त्म हो जाता तो वेरी इलोक्वेंट ठीक था, ठीक है. बट यहाँ पर थोड़ा सा ये भी चल रहा है, एक वो बता रहे हैं कि मैंने इनसे ज़्यादा अच्छा तो अभी तक कोई नहीं सुना है. सो इसलिए ही वॉज इलोक्वेंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड, इसलिए ये भी नहीं होगा तो मोस्ट इलोक्वेंट होगा, क्योंकि मैंने इससे अच्छा तो कभी सुना ही नहीं. सो दैट्स व्हाई वी विल यूज़ सुपरलेटिव डिग्री हियर. What was the name of the person to whom you spoke on the phone? Okay, straight forward. ये क्यों आया दिमाग में मुझे नहीं पता. why we are using whom, उसमें एक subject objective वाला होता है. I never go through that. I just believe on my intuitions because मैं ऐसे ही लिखता. Even if I'm speaking in English, that's how I will speak, right? So what was the name of the person? और ये मैंने बिना ऑप्शन देख के मेरे दिमाग में आया अभी जो मैंने whom वाला बोला. So I just read this particular thing and I was able to get that whom आएगा यहाँ पर. Okay, so that's why if you want to score good in English, you need to live English. Okay, so what was the name of the person to whom you spoke on the phone? But now also I know that we are using this as an object, so there's the reason we are using whom and there's something like this, blah 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 blah. Have you seen Mohan lately? Okay, because we don't use yesterday. Have you seen Mohan yesterday? Have you been lastly? Have you seen Mohan late? We don't use such things. And how I know this? Because I read a lot. I don't know why, I don't know the exact grammatical reason behind it and other things like that. But you can see in the fill in the blanks, I have each one of them as correct. I have 100% accuracy in fill in the blanks. Okay, now moving ahead to the close composition. Here also you can see I have 100% accuracy. Nothing is wrong. Right. And right. So for this, again, it is necessary in regard to any word to consider. Okay, it is necessary in regard to any word to consider not its proper justification in past agreement. अब see, it is necessary connecting any word like क्या हो रहा है in regard to, क्योंकि war की बात हो रही है. So war के regard में ये necessary है to consider कि not its proper justification in past agreement, to consider not its proper justification in past agreements. So regards में war की बात हो रही है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ it is necessary linking any word to consider not its proper justification. So in regard to, ऐसे करके मतलब आपको जो सबने थोड़ा इंट्यूशन जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये हो रहा है यहाँ पर, you just go through it. फिर आगे बढ़ते हैं. Moving ahead with preposition and determiners. So I'll suggest you to go through this preposition thing and determiners, just study them.
religiously. Steve has gone away. He will be back. He will be back until Monday. Okay. So for this, what you can do, you can just go through the determiners and preposition grammar classes. This will help you a lot. You can just search something on YouTube and grammar classes of preposition, and this will do your work. You can just, I will suggest you to just watch some um, like 1 or 2 hour video regarding grammar, preposition and determiners. You will be fine. Ordering of chunks in a sentence, PQRS. सी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का, क्योंकि ये कभी कभार इसमें सबसे अच्छे तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन या बाकी चीज़ें कर सकते हैं, एंड पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हेयर, और एक्यूरेसी ख़राब होती है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इंडिया हैज़ बिकम विद टाइम. सबसे पहले मैं देखूंगा, मैं एलिमिनेट करूंगा कि किस सेंटेंस से ये स्टार्ट नहीं हो सकता, ये भी जो मेरा PQRS है. सो विथ टाइम, क्यों देख रहा हूँ विथ टाइम, क्या विथ टाइम, सो विथ टाइम दिख रहा है मुझे. ठीक है, विथ टाइम इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर, अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर. ठीक है, अब मैं पहले कनेक्टिंग वाला देखूंगा. विथ टाइम इंट्रोडक्शन हो सकता है समय के साथ. इंडिया हैज़ बिकम. ठीक है, अब मैं सबसे पहले देख रहा हूँ आर से क्या स्टार्ट हो सकता है. आर से स्टार्ट, अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ टोटल अवेलेबल वाटर, नहीं हो सकता. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर, इंडिया हैज़ बिकम, अकाउंटिंग फॉर 20% विथ टाइम, नहीं सूट नहीं कर रहा ये भी. सो मैंने ये देखा कि विथ टाइम से स्टार्ट हो सकता है. इंडिया हैज़ बिकम विथ टाइम, अकाउंटिंग फॉर, नहीं ये भी सूट नहीं कर रहा. सो विथ टाइम से ही स्टार्ट होगा. सो QPRS ऐसे करके स्टार्ट किया. सो इसके लिए भी मैं बोलूँगा कि आप कैट के जो PQRS हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें. सो ये PQRS में मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगा. अगर ये दिमाग में आपके क्लिक नहीं कर रहा है तो प्लीज़ लेफ्ट इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, और जब आपका पूरा पेपर हो जाए तो उसके बाद आप इसे दोबारा आना. इवन मैंने भी यही किया था, क्योंकि ये वाले जो एक ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है इसको भी मैं PQRS ही कहता हूँ. सो इनमें थोड़ा सा समय लग रहा था. ये वाले हमारे टाइम पर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे. एज यू कैन सी ये वाला मेरा एक गलत है यहाँ पर, 84 वाला. 2 सेकेंड. सो ये वाला जो आप देख सकते हैं 84 वाला, ये वाला मेरा इनकरेक्ट हो गया था. तो मेरे को जो भी टफ लग रहे थे मुझे इनमें से जो भी, तो मैंने इनको, जब मैंने पूरा पेपर कर लिया था इंग्लिश का पेपर, तो उसके बाद मैं आया था इन्हें मार्क करने. तो इसलिए PQRS मतलब अगर आपको एक बार में क्लिक हो रहा है तो बेटर. अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो प्लीज़ मार्केट लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस, और इसको आप वापस आके कर सकते हैं. ठीक है, सो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर PQRS लगाइए, और इफ़ यू कैन गो विथ कैट लेवल PQRS वो भी अच्छा रहेगा. So our next questions are related with idiom and phrases. For idiom phrases, what you can do, you can watch a video on YouTube. Otherwise, I have my personal notes on idiom and phrases. I can make a short video on it, hardly of half an hour, and that will cover your each and every idiom and phrases. Please pardon me from the noise in my background. There is some construction work going on. And the next is ordering of sentences. So again, as I told you, these are just very much similar like PQRS. Moving ahead, we have antonyms. Antonyms, just go through any vocab related video which I told you in my previous videos. You can watch any synonym video. Even if you have watched a synonym video, you will be very much easy. It would be very easy for you to like get an idea. And I also have one more thing. Just give me a second to tell you, which is this is word power made easy. So ये जैसे आप वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, मेलिशियस. सो यहाँ पर बताया गया है कि मेल मतलब क्या होता है कि कुछ भी थोड़ी सी बेकार चीज़ें. ठीक है, सो बेनिवोलेंट मतलब होता है अच्छा. सो इन सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें मिल जाएगा. ये पढ़ना बहुत आसान है. सो मतलब यू कैन फिनिश दिस बुक विद इन मंथ और सो. सो ये इस बार के सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है. जो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हो दे कैन गो थ्रू वर्ड मेड इजी, और उसके बाद वो लोग वर्कआउट कर सकते हैं फ्रॉम यूट्यूब. मूविंग अहेड, एज यू कैन सी माई ईच एंड एवरी एंटियोनम इज करेक्ट हेयर. इसके बाद है स्पॉटिंग एरर्स. फॉर स्पॉटिंग एरर्स देयर इज 60 ग्रामर रूल्स वीडियो बाय रानी मैम. यू कैन वॉच दैट. Now we are here at spotting errors. This is my weakest section. I can't spot errors that easily, even though I have watched various YouTube videos. I completed a marathon of 60 grammar rules and each and everything what not. But इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है कि इस पर मतलब ज़्यादा मेहनत
ना करिए, क्योंकि देख सकते हैं हम ये 10 क्वेश्चन हैं, अगर बाकी कहीं और जगह मेहनत करी जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपको इसको मेहनत करनी है, इफ़ यू हैव लॉन्ग टर्म प्लान रिगार्डिंग दिस, तो अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो यू कैन गो थ्रू यूट्यूब वीडियोज़ ऑन 60 ग्रामर रूल्स एंड अदर थिंग्स लाइक दिस, सो वो आपको हेल्प करेंगे। बट आई कांट कमेंट मच ऑन दिस, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें मेरे 4 गलत हैं, 2 सही हैं, और इस पेज में मेरे 3 सही हैं। मतलब ओवरऑल मेरे 5 सही हैं और 5 गलत है, 50% एक्यूरेसी इन स्पॉटिंग एरर्स एंड रेस्ट इज सिनोनिम्स। सो यस, डूइंग वोकैब यहाँ पर देख सकते हैं मेरा 1 गलत है बस, एंड दैट्स हाउ आई डिड 22 क्वेश्चन करेक्ट। सो माय सजेशन टू यू गाइस इज डू पेपर इन 3 रीडिंग्स, ओके, 3 सेट्स। 3 बार आपको पेपर चेक करना है। पहली बार में जो सबसे ज़्यादा आसानी से बन रहा है उन पर बढ़े, आगे बढ़े। दूसरी बार में जो बन रहे, जो छूटे थे उनको करें। तीसरी बार में जो बिल्कुल भी जिन आइडिया नहीं करें उनको करें। ये वाला आप तब करेंगे जब आप OMR मार के कर लेंगे, ये तो आप OMR मार्क करने से पहले करेंगे। सो दिस शुड बी योर प्लान। सो अब इसके बाद आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर GK और मैथमेटिक्स, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड ऑल्सो एज आई प्रॉमिस्ड, आई डिडंट प्रॉमिस्ड, बट या आई विल बी मेकिंग अ वीडियो अबाउट idiom and phrases from my notes, so that will be very easy for you. And also I'm thinking ki, if I get a good response in this video, like good like ratio and good comments, so then there are chances that I will also make a advanced mathematics smart notes, kind of a smart study kind of a video, which will help you a lot in clearing your mathematics exam. So that's it in this video. I will meet you in another video in which I will discuss these remaining booklets. Okay, so bye bye, take care, see you soon.